Good evening, everyone. So today is the last class of complex number. So right, yesterday I left with the straight line. So right heading straight line. Am I audible enough? So let us just, what is the equation of straight line in complex form? This one is alpha bar z plus alpha z plus beta equal to 0, where alpha is a complex number and beta is a real number. This is the equation of straight line in complex form. Basically, you should remember, if any equation is given in this form, just example, a straight line is given 2x, sorry, 2 plus 3i into z plus 2 minus 3i into y, z bar plus 5 equal to 0. That's it is given. This is the straight line. Find slope and y-intercept. Straight line 2 plus 3i into z plus 2 minus 3i into z bar plus 5 equal to 0. Find the slope and y-intercept of the line. अल्फा बार स्ट्रेट लाइन के नीचे लिखा है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0. अल्फा जेड बार है, ये जेड बार है. अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बीटा इक्वल टू 0, where alpha is a complex number and a beta is a real number. So if any equation in this form is given, then you should always remember that it is the equation of the line. For example, it is given straight line
Even if it is not mentioned, it is a equation of straight line, you should assume it is because it is given in the form of alpha bar z plus alpha z bar plus beta equal to 0. So this is the equation of straight line. Now we if any equation related to straight line or circle is asked in the exam, then always put z is equal to x plus iy. So what you will get, you will get this one plus 5 equal to 0. Now multiply it. 2x minus 2iy minus 3ix minus 3y plus 5 equal to 0. Understood? You just have to multiply. So these two terms, automatically these two terms are cancelled out. So what I'm getting, 4x minus 6y plus 5 equal to 0. So this is the equation of a straight line. So no need to remember any result. Just you have to remember the process, how I am going to solve this such type of problem. Then what is the slope? Slope is minus a by b. So that is slope is 2 by 3. What is y-intercept? Y-intercept is if you put x is equal to 0, put x is equal to 0, then minus 6y plus 5 equal to 0, that is y is 5 by 6. So this is y-intercept. Have you written? Have you written all these? Now write two result. If there are two equation,
alpha bar z alpha 1 z alpha 1 bar z plus alpha 1 z bar plus beta 1 equal to 0, and another one is this. These lines are first part parallel if alpha 1 if alpha 1 bar upon alpha 2 bar is equal to alpha 1 upon alpha 2, that is ratio of quotient of z bar upon is same as quotient of z. Perpendicular if if you want to write, second one is, this is first result, alpha z plus alpha bar z plus alpha z bar plus beta equal to 0. If you need to write a parallel line, then you just have to change this beta only. You just have to change this beta only, that is, let's say this is one is gamma. Perpendicular line, if you need to find the perpendicular line, then you just have to change this sign only. As such, it is not an important result, but you should remember they can ask in JEE Advance. It is not important for JEE Mains, but it is important for JEE Advance. Sometimes they ask some these type of theoretical result, which takes too much time to uh, prove during exam. Yes, you need to change only sign only. You just have to change the sign only. One term is defined, complex slope. What is complex slope? Complex slope is minus alpha upon alpha bar, that is minus coefficient of z bar upon coefficient of z. Again repeating, these are not as important result for mains. These are result important for advance only. They may ask such type of result in any of the option. They may give uh, in any option of in multiple correct option, multiple correct question. So either you have to just mug up these result or leave it.
because as these results are not important. दोनों चेंज करना है बेटा in case of perpendicular line or parallel line. In case of perpendicular line, you just have to change the you need to change the coefficient z bar and as well as constant term. Circle as I have already told discussed with you, this is radius. Then what is the equation of circle? Equation of circle is z minus z naught equal to r, where z naught is center and r is radius. Now sometimes they split this one. If you square it, you know this result. What is mod z square? Mod z square is z into z bar. So I am just going to split this modulus into z minus z naught into its bar. Sometimes they write given equation in this form, so it becomes a little bit dangerous looking expression. Clear? Understood? This one you used to interpretation of modulus. I have told you what is the interpretation of modulus. Interpretation of modulus is it is the distance between 2 points, z minus z naught equal to r. Now if you multiply this, what you will get? Z bar, z naught bar z naught z bar plus z naught bar minus r square equal to 0. So basically I am getting z bar minus z naught bar z minus z naught z bar. So basically this is the equation of the circle in this form. Sometimes they write alpha z plus alpha bar z plus alpha z bar plus beta is equal to 0. So this is the equation of circle. This is the equation of the circle in standard form. So if you know this is the equation of circle, then you have to calculate what is center. Just compare z naught is equal to, what is z naught? Z naught is equal to minus alpha, that is minus coefficient of z bar. Always remember in this form what is the center is negative times the coefficient of z bar. Always remember in this form. Don't remember in the form of alpha or beta. Otherwise you will confused with alpha is the coefficient of z or z bar. So always remember in the form, in this form, z center is minus times coefficient of z bar. And what is radius? So z naught bar minus r square equal to beta. So r square is z naught minus beta, that is mod alpha square minus beta. So radius is under root of mod alpha square minus beta. So this is the radius. Beta, just need, you have to compare these two. Compare it. What are you getting? Minus z coefficient of z bar. What are coefficient of z bar? Minus z naught equal to alpha. So z naught will be minus alpha.
Here Z naught is the center. So what I'm getting? I'm getting Z naught is equal to minus alpha. So you should remember in the form of minus coefficient of Z bar. Always remember center in the form of minus coefficient of Z bar. Understood? Compare both sides. Z naught bar minus R square equal to beta. Are you getting this point? So Z naught bar will be mod Z naught ka whole square. What is Z naught bar? Z naught bar is mod Z naught ka whole square. So R square will be mod Z naught whole square minus beta. And what is Z naught? Z naught is minus alpha. So it becomes minus mod alpha. So minus mod alpha is same as mod alpha whole square. So what is center? Center is minus times coefficient of Z bar. So center is minus 2 plus 3i. So center is minus 2 comma 3. And what is radius? Radius is under root of modulus of 2 plus 3i whole square minus 12. So this is basically 13 minus 12. So it is 1. Understood? For example, if you forget all these result,
Then how can you calculate center and radius? Just put z is equal to x plus iy. So it become x plus iy into x minus iy in plus 2 plus 3i into x plus iy plus 2 minus 3i into x minus iy plus 12 equal to 0. Just multiply these. So the see all these iota terms are cancelled out. So finally what I am getting, x square plus y square plus 4x minus 6y plus 12 equal to 0. So this is general equation of circle which you have studied in circle in coordinate geometry. Now you know the formula of center and radius. So center is minus half times cosine of x and cosine of y, so it becomes minus 2 and 3. And what is radius? G square plus f square minus c, so this is 1. So these, first of all you should remember the result. If any, if during exam you are unable to recall all these results, then just put z is equal to x plus iy and calculate the whole circle. It will take hardly 30 seconds to calculate this. You will get the circle. After that you can calculate the center and radius. G square under root of g square plus f square minus c. What is radius? What is the formula for radius? Have you understood? Have you all understood this? Have you understood this problem? Now write diametric form of circle. Let's say this is the diameter AB is the diameter. P is any general point on this circle. Now you know. Now you can apply Pythagoras theorem here. AP square plus BP square is equal to AB square. So you can say this one is Z minus Z1 whole square plus modulus of Z minus Z2 whole square is equal to modulus of Z1 minus Z2 whole square.
So this is the equation of circle in diametric form. Sometimes they ask this result, if modulus of z minus z1 का whole square plus z minus z2 whole square equal to k represents a circle, then k is always greater than equal to 1 by 2 modulus of z1 minus z2 whole square. So this is the exclusive result for uh, basically this is important result. In case of circle, they may ask this result directly. Understood this point? Now see, argument of z minus z1 upon z minus z2 equal to alpha represents a part of circle. What it represent? It represent a part of circle. Note, you just have to mug up. These are the lengthy derivation. Either you mug up or you leave it. Diametric form. I have applied simply Pythagoras theorem. AP square plus BP square is equal to AB square. So what is AP square? What is AP? AP is distance between 2 points. So it is modulus of Z minus Z1. Note 1, you just have to mug up. This type of equation represent a circle if k is greater than equal to 1 by 2 modulus of Z1 minus Z2 whole square. I told you this complex number, sometimes some of the results are very calculative. So either you mug up or leave it.
Argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to alpha represents a part of circle. If 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 alpha is acute, then z lies on the major segment. If alpha is 90 degree, then z lies on half circle. If alpha is obtuse, then z lies on minor segment, because angle made by any chord, if this is the circle, then angle made by this chord in any point on the major segment is always acute. This angle is always acute angle. Understood? If you take this and take any point on minor segment, this angle is always obtuse. And you know this one, if AB is the diameter, then this will be 90 degree. Angle made by chord on major segment is always a acute angle. Angle made by chord on minor segment is always obtuse angle. This is the basic result. आप कोई भी बना के देख सकते हैं, डायग्राम बनाइए। ये मेजर सेगमेंट है कि नहीं है? ये वाला एंगल कैसा दिख रहा है आपको? एक्यूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज ऑब्ट्यूज and this one is 90 degree. If alpha is 90 degree, then z lies on half circle. If alpha is obtuse, then z lies on minor segment. Understood? So let me explain some of the locus. You will get all these result. You will automatically mug up all these result. Right? First question, find the locus. First part is argument of z
minus 1 upon z plus 1 is equal to pi by 2. Now see, I am going to relate it with the what is z minus z1 upon z minus z2. This is the rotation theorem. So can you say argument of z minus z1 upon z minus z2 is theta? Can you say argument of this complex number is theta? This is magnitude, this is argument, na? Now, so if it is given, it means this is a initial vector and this one is final vector. Numerator, final vector is written in the numerator and initial vector is written in the denominator. So understood this one? So now see, these are the, if this is pi by 2, it means these z1 and z2 will form a end point of the diameter. So end point of diameter are 1 and minus 1. So now this one is 1, this one is minus 1. So this is the equation of circle, and second possibility is this. So these are the two possible cases. 1 and minus 1 are the end point of the diameter. Now consider this, let's say this is the any point on this circle, half part of the circle. So let's say this is one is z. So now if I join this with the 1, so what is the vector, what is this vector? So this will be the vector z minus 1. Understood? What will be the this vector? This will be z plus 1. So now I have to rotate. Initial vector is z plus 1 and final vector is this. So I have to rotate this one. So this is the way. So this one is 90 degree. So I have rotated. So this is the correct one. Now consider this scenario. Let's say this is the z point. So if I join this with the 1, so I'm getting, I will get, this is z. So this will get z minus 1. If you join with this, so I will get z plus 1. So if you rotate this z plus 1 with the, so you have to rotate in clockwise direction. So this angle will be minus pi by 2. So have you understood what is the difference between these two? In the first case, angle is 90 degree because I have rotated z plus 1 to form z minus 1 in anti-clockwise direction. But in case of second one, I have rotated z plus 1 to form z minus 1 in clockwise direction. So that's why our correct locus is this one and this is wrong. Why it is wrong? Because if it is given argument of z minus 1 upon z plus 1 is equal to minus pi by 2, then it is the locus of this one. Basically, this is the locus of argument of z minus 1 upon z plus 1. This is equal to minus pi by 2. If it is given, this is the locus of. Second one is the locus of argument of z minus 1 upon z plus 1 equal to minus pi by 2. And first one is the locus of argument of z minus 1 upon z plus 1 equal to pi by 2. This angle is already pi by 2, but how I am going to rotate in clockwise or anti-clockwise sense?
So understood how I am going to differentiate between these two circle. The locus is a half part of the circle, but which half part? Upper half part or lower half part? Yes, I have rotated z plus 1 to form z minus 1. Z plus 1 is the initial vector and z minus is the final vector. So I have to rotate in clockwise sense. So second one, now can you draw this diagram? I am giving you one example. Z minus I upon Z plus I, this one is equal to pi by 2. So draw the diagram of this circle. Let's say take any point Z here. So if you join it, so it will become, let's say this vector will become Z plus I and this vector will become Z minus I. So I have to rotate Z plus 1 to form Z minus I in anti-clockwise, in clockwise direction. So basically it is the locus of, this one is the locus of this. Understood? So now consider this situation, this will be Z minus I and this vector will be Z plus I. So I have to rotate, which way? I have to rotate in anti-clockwise sense. So it is the correct option. So this one is the locus of this. Understood? Have you understood these two? Okay, very good. Now in coordinate geometry form or in set form, in coordinate geometry form, this is the equation of circle having center at origin and radius is 1. But which part? When x is positive. And this is the equation of circle when x is negative. So this is the equation of circle when x is negative. Sometimes they write in this form, y is equal to, sorry, x is equal to
they may write x is equal to minus under root of 1 minus y square. Either rate, either they write this way, x square plus y square equal to 1 and x is greater than 0, or they simply write x is equal to under root of 1 minus y square. X is equal to under root of 1 minus y square implies that x is a positive and x lies on the circle. X is positive means it is a right part of the circle. Yes, similarly you can say this one is y is equal to under root of 1 minus x square, and this one is y is equal to minus under root of 1 minus x square. Now can you draw the locus of this one? केतन, सर हाँ जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ वो नहीं समझा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 कैसे है। अरे सेंटर तो यही है ना, सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर तो यही है ओरिजिन। आई और सर माइनस आई, ये लाइन डायमीटर है ना ये वाली, यस तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा ओरिजिन? वो तो सेंटर दोनों के ओरिजिन ही है, बस वो हमको डिफरेंशिएट करें, इट इज ए हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, नॉट कंप्लीट सर्कल। ओके सर, थैंक यू सर।
Now, now can you draw the locus of this one? Now take any point z here. So this will be this vector will be z plus I and this vector will be z minus I. So I have to rotate z minus I to form z plus I. So I have to rotate in clockwise direction. So this angle is pi by 3. Understood? So have you understood this point or not? So basically this is this major part. Left part locus is only right part, only major segment. Now let's say this is the center. I have to find the center O. So this is pi by 3. This one is 1. Let's say is origin. So let's say it is A and radius is R. So sine pi by 3 is equal to 1 by R. So R is 2 by root 3. Tan pi by 3 is equal to 1 by A. So A is 1 by root 3. So ultimately center is 1 by root 3 comma 0 and radius is 2 by root 3. So now you can write the equation of circle will be x minus 1 by root 3 whole square plus y square equal to r square and x is greater than 0. अरे यार क्या करते हो तुम लोग ये मैग्नीट्यूड 1 होगा ना आई ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये भी नहीं आ रहा है तुम लोगों को कि आई क्या होता है माइनस आई क्या होता है आई का मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट जब ऐसे एक्स एक्सिस के डिस्टेंस तो 1 लिखते हैं जब वाई एक्सिस के लॉन्ग में डिस्टेंस होती है तो उसे आई 2 आई 3 आई ऐसे लिखते हैं
Understood? If mod z equal to 2, then what is the locus of minus 1 plus 5z? If mod z is equal to 2, then what is the locus of minus 1 plus 5z? How can you calculate? So assume, let's say w is minus 1 plus 5z. So you can write w plus 1 is equal to 5z. Now just take modulus here. You will get this. So 5 into 2, that is 10. So uh, where is this w lie? What is the locus of w? What what modulus of w plus 1 equal to 10 represents? W lies in a circle having center at minus 1 comma 0 and radius is 10. Z is equal to lambda plus 3 plus iota under root of 5 minus lambda square, where lambda is a real parameter. Lambda is a real parameter. If such type of equation comes, then what you will do? Just assume z is equal to x plus iy. You have to find the locus of lambda. Find locus of z. Now just compare. You will get x is equal to lambda plus 3 and y is equal to 5 minus lambda square. So just eliminate lambda because lambda is a parameter. Always you have to eliminate parameter in if you have to find the locus, then always eliminate the parameter. So understood? So y is positive. If you square it, what you will get? You are getting this one. So it is x plus 3 whole square plus y square equal to 5. So basically it is a circle having center at minus 3 comma 0 and radius is root 5.
but which part? Only upper part. This center is minus 3 comma 0 and radius is root 5. अरे बेटा यदि एग्जाम में नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं करोगे क्या? क्या आप बी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं? मैं किसी बी टेस्ट सी टेस्ट की तैयारी, मैं पूरा जेई मेंस से एडवांस के पर्पज से पढ़ाता हूँ, बी टेस्ट के पर्पज से नहीं। ये छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी आप ही करते रहिए। अरे बेटा जस्ट जेड इज इक्वल टू, आई हैव एज्यूम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड कंपेयर बोथ साइड, so I'm getting x is equal to lambda plus 3 and y is equal to under root of 5 minus lambda square. Eliminate lambda and you will get the result. फर्स्ट इक्वेशन से x माइनस 3 है ना, यहाँ से लैम्डा क्या आएगा? x माइनस 3, सो यहाँ x माइनस 3 है ये। सो बेसिकली सेंटर इज 3 कॉमा 0, सेंटर इज 3 कॉमा 0. From first equation, lambda is equal to x minus 3 and I have put it in the second equation. Y is equal to under root. So if y is equal to root, it means y must be greater than equal to 0. What is y? Y is root. So y must be greater than equal to 0. Most of the time, it is an important question. Mark it for JEE advanced, JEE mains. They simply ask what is the locus of Z. Straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola. Sometimes these are the possible options. They simply write circle, not part of circle. ठीक है, basically it is a part of circle. If they have written in any option it is a circle, then it is also true, because ultimately part of circle is also circle. Write first note, if z1 z2 z3 are collinear, sorry, if z1 z2 z3 are
are in AP, then Z1, Z2, Z3 are collinear. Basically, if Z1, Z2, Z3 are in AP, then what is the relation? That is Z2 is equal to Z1 plus Z3 by 2. So what is this? It is basically if this is Z1, this is Z3, so what is Z2? Z2 is simply the midpoint. So basically all these 3 points will be collinear. So basically all these 3 points will be collinear or lie in a line. If Z1, Z2, Z3 are in HP, right, first one, then origin Z1, Z2, Z3 are concyclic. इसको भी समझ लीजिए फिर लिख लीजिए एक साथ. देखिए बेटा, if this is origin, this is Z1, this is Z2 and this is Z3. If we have to find, now see, Z1, Z2, Z3 are in HP. It means what is the relation between Z1, Z2 and Z3? 2 by Z2 is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z3. So I'm writing this in this form: 1 by Z2 minus 1 by Z1 is equal to 1 by Z3 minus 1 by Z2. Take LCM. So Z1 minus Z2 upon Z2 Z1, Z2 minus Z3 upon Z3 Z2. So Z2 Z2 cancelled out. So you will get Z3 upon Z1 into Z1 minus Z2 upon Z2 minus Z3 is equal to 1. So basically I am taking minus 1 is common from denominator. So this will become this Z3 minus Z2. This is equal to minus 1. So have you understood this calculation? If Z1, Z2, Z3 are in HP, then what is the relation between Z1, Z2 and Z3? It will be 2 by Z2 is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z3. So basically you can write 1 by Z2 minus 1 by Z1 is equal to 1 by Z3 minus 1 by Z2. So I have just taken calculation. I have taken minus 1 here common. I have written Z2 minus Z3 in. पहले तो कैलकुलेशन आपको समझ में आया नहीं आया? कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो फिर मैं इंटरप्रिटेशन सब गड़बड़ हो जाएगा. केतन क्या प्रॉब्लम है बताइए. हाँ बेटा Z3 इसका सबसे पहले इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना. तो यदि मैं इसमें आर्गुमेंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1. What is argument of minus 1? It is pi. So now can you interpret this one, first one? So basically this Z3 minus 0 means this is the vector. And Z1 minus 0 means this is the vector. So I have rotated this vector, so you will get alpha. So basically this is alpha. Now Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. So this is Z1 minus Z2 and this is Z3 minus Z2. So I have rotated in this form, so I will get beta. So this one is beta. So basically sum of opposite angle in quadrilateral is pi. So if in any
if in any quadrilateral, if sum of opposite angle is pi 180 degree, then this quadrilateral will be cyclic. आया कि नहीं आया समझ में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? Because sum of opposite angle is 180 degree, then these all point will lie in a circle. Now you can write, and जहां भी आपको प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे. Now this topic is theoretically over. Now we are going to practice some of the problem in complex number, some of the uh, problem related to locus, or some examples we are going to discuss in complex number. Theoretical, this chapter is over. केतन, सर वो फोर्थ क्वेश्चन में सेंटर कैसे निकाला वो नहीं पता. किसमें? फोर्थ वाले में? तो फोर्थ वाले में इसका सेंटर समझ में नहीं आता है. जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डब्लू. इसको जीरो कर दोगे तो सेंटर आ जाता है, सिंपल सी बात है. मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, यदि इसको जीरो करो तो जेड क्या आएगा? जेड नॉट आ जाएगा. यही तो सेंटर है. तो ओके बेसिकली सर. आप इसको जीरो कर दोगे तो डब्लू क्या आ जाएगा? -1 आएगा ना. और -1 क्या होगा? सेंटर होगा. ओके सर, थैंक यू सर.
first one is easy. If Z1, Z2, Z3 are in AP, then Z1 they will form. They are collinear or they will lie in a line. Second one is little bit difficult. So which you should remember, if Z1, Z2, Z3 are in HP, then these complex number along with origin will be concyclic. Understood? Now see first problem. I am going to discuss two problem, miscellaneous problem. First, given z z plus 1 to the power 7 is equal minus z to the power 7 equal to 0, then prove that, basically ऐसे लिख लो, prove that all roots of the equation
z minus 1 to the power 7 minus z to the power 7 equal to 0 are collinear and find the sum of real part of z. Find sum of real part of z. Now see this one, z minus 7 whole to the power z to the power 7. If you take mod here, take modulus here, what you will get? You will get this. Understood this one? So what is the interpretation of this? Here interpretation of z lies on the line segment joining 1 and origin. So basically this is origin, this is 1. So z is the point which lies on this line. So z lies here, and z line, this line is the vertical line. So all real part would be 1 by 2. But how many roots are there? How many roots are there in the equation? If you expand z minus 1 to the power 7, then z to the power 7 will cancelled out. So you will get only coefficient of z to the power 6 only. So basically there are 6 roots. There are 6 possible roots of this equation. There are 6 roots of the equation. So sum of real part will be 6 into each part is 1 by 2. So answer will be 3. First of all roots are lie on this line, vertical line, x is equal to half. This is the equation of line x is equal to half. So yes, if you expand this, z1 z minus 1 to the power 7. Now consider only, let's say this is only z square. So if you expand this, what you will get? These two term will cancelled out. So basically I am getting only z, that is one less power. Similarly, if you cube it, what you will get? If you expand this, you will get this. So these two term will cancelled out. Similarly, if you take z minus 1 to the power 7 is equal to z to the power 7, then you will get 6-degree equation. Understood? If you expand z minus 1 to the power 7 is equal, then you will get 6-degree equation. 6-degree equation means it has 6 roots. Understood or not? Z to the power 7 term will cancelled out. बेटा ये तो लोकस मैंने बहुत पहले लिखाया था ना आपको, इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस में. Distance of z from 1 and distance of z from left hand side represent distance of z from 1, right hand side represent distance of z from origin. So basically
distance of z from origin and 1 are equal, it means z will lie on the perpendicular bisector of the line segment joining 1 and origin. Yes, perpendicular bisector wala. So z will lie on the line segment joining 1 and origin. तो सबके सब कहाँ पे लाई करेंगे? वर्टिकल लाइन में, x इक्वल टू हाफ वाले लाइन पे ही सबके सब रूट लाई करेंगे. So I am giving you one more problem. After that, break. After break, I'm going to discuss exercise 2 of module. Basically, I will give you some time to solve uh, some problem of exercise 2. Then I will discuss. It is possible that some of the students may not have tried exercise 2. कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ट्राई करिएगा तो उससे सीखोगे. Let z1 z2 both satisfy the equation real part of z is equal to modulus of z minus 2 and argument of z1 minus z2 is pi by 3. Then find imaginary part of z1 plus z2. हाँ बेटा, ब्रेक के बाद मैं एक्सरसाइज 2 को की हम प्रैक्टिस करेंगे. मैं कोई प्रॉब्लम दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, फिर मैं कुछ समय के बाद उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 2 अभी ट्राई नहीं की है, तो वो परेशान मत होएं. क्लास के समय ही, ड्यूरेशन में ही अभी आप सॉल्व करेंगे और फिर मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है? तो इससे एक दो आपके लिए दो चीजें हो जाएंगी. पहला तो आपकी मल्टीपल करेक्ट को सॉल्व करना विद इन टाइम लिमिट, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है? तो इसमें क्या करना है बेटा, z को इफ z इज एक्स वाई, देन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z माइनस 3 क्या होगा? ये x हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 3. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. So if you simplify square it, you will get y square is equal to 6x plus 9. Understood? Now we have to find let z1 z2 are the root of the equation. Now we have to assume let z1 is x1 plus iy1, and because जो हमको गिवन है ना बेटा, इसको हम इंटरप्रिटेशन हमने नहीं पढ़ा अभी तक. हर चीज का इंटरप्रिटेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपको हर चीज का इंटरप्रिटेशन याद नहीं करना है. आपको स्टैंडर्ड मैंने लिखा दिए, यदि कुछ भी आपको आता है इसके अलावा, तो बाकी आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके निकाल लेना है. तो यहाँ पे x1 को y, इसको x1 y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आर्गू इमेजिनरी पार्ट, तो y निकालना है. तो हम क्या करते हैं,
तो पहले चलो अभी देखते हैं हमको ज़रूरत क्या होती है। अच्छा, हमको गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2। So what will be the z1 minus z2? Z1 minus z2 will x1 plus I by 1, x2 minus I by 2. So argument will be, this is theta. Theta is given pi by 3. Given कि नहीं given है? So tan theta y1 plus y2 upon x1 plus x2 होता है कि नहीं होता? tan theta के equal to tan pi by 3 root 3। हमने पढ़ा था ना अल्फा क्या होता था? tan इनवर्स y tan अल्फा होता था ना mod y upon x। तो यही तो मैंने लिख दिया है। So basically I am getting y1 plus y2 is equal to root 3 times x1 plus x2। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सॉरी, ये y1 माइनस y2 आ रहा है, ये y1 माइनस y2, ये x1 माइनस x2 आ रहा है। ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है y1 माइनस y2, y आ रहा है y1 माइनस y2, x आ रहा है x1 माइनस x2। देखिए ये आ रहा है ना, आर्गुमेंट ऑफ क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस 2, सो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स x1 minus x2। Then what is x1 minus what is y1 minus y2? If I factorize left hand side, so I will get, so what is our y1 minus y2? Y1 minus y2 is root 3 times x1 minus x2, y1 plus y2 is equal to 6 times x1 minus x2। So basically y1 plus y2 is 6 upon root 3, that is 2 root 3। हाँ बेटा 6x माइनस 9 होगा ये। बेटा ये 6x माइनस 9 होगा, इसे करेक्ट कर लेना। ये 6x माइनस 9 होगा, तो बस हम, लेकिन अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 विल कैंसल्ड आउट, you will get the same answer. This is our final answer. Sometimes कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू डू कैलकुलेशन ओनली। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट ओनली, यू जस्ट हैव टू डू कैलकुलेशन। देयर इज नो सिग्निफिकेंस हियर, देयर इज नो इंटरप्रिटेशन हियर। रियल पार्ट ऑफ z is equal to modulus of z minus 3, you don't have to remember this interpretation of this equation, you just have to do the calculation। So you just have to put z is equal to x plus iy and calculate the whole equation। So if I put z is equal to xy here, so I am getting y square is equal to 6x minus 9। So z1 z2 both are satisfying, so z1 I have assumed z1 is x1 plus i1 and z2 is x2 plus iy2। So I put these 2 points in the equation। So y1 square is equal to 6x1 minus 9, and second one will be y2 square minus 6x2 minus 9। So basically these are the two equation, and second is given argument of z1 minus z2 is pi by 3। So what is the argument of z1 minus z2? Just z1 minus z2 will be this complex number, that is this। So what is the argument? Argument with tan theta is equal to क्या होगा, आर्गुमेंट होता है ना tan अल्फा इज इक्वल टू, ये थीटा है, सो tan थीटा विल बी पाई बाय 3, और यहाँ से tan थीटा आ जाएगा y अपॉन x, दैट इज y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2।
अब इसमें आ गया तो आपने फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, तो इससे बाकी फिर सॉल्व होके y1 प्लस y2 आ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड y1 प्लस y2, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, दैट इज वी नीड टू फाइंड y1 प्लस y2। आप सॉल्व कर देखिए इसको कैसे हमने कैलकुलेट किया है। There are two locus, basically there are two locus which I have not which I have not taught till now, because you will study them in 12th. One is called ellipse and another is called hyperbola. These two are important locus for exam point of view. So remember these two locus you will study in 12th class. So आप लास्ट में कहीं पे लिख लीजिएगा, remember the locus of ellipse and complex ellipse and hyperbola in terms of complex number in 12th। तो 12th में आपको याद रखना है क्योंकि वो important point है। हैव यू अंडरस्टूड? ये प्योर कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ब्रेक है, ब्रेक टिल 7:10। आई विल डिस्कस हाइपरबोला। जब बेटा आपने पढ़ा ही नहीं है, एलिप्स आप जानते ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बता के भी। आप उसको मार्क कर लीजिए कि वो आपको जब आप 12th में हाइपरबोला पढ़ लेंगे, तब आप इलिप्स और हाइपरबोला सर से कहिएगा कि आप सर इलिप्स और हाइपरबोला का भी लोकस बता दीजिए, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे 2 मिनट में। यस, आई विल टेल यू द सिलेबस आफ्टर द ब्रेक।
बच्चों जो आपका बीटेस का सिलेबस है उसका बहुत ही सिलेक्टिव सिलेबस है। आपको मॉडुलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट ये सब आना चाहिए, और जो मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सिखाई है वो आना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको, हाँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बेसिक, रोटेशन थ्योरम का बेसिक, लोकस वाला एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला पार्ट ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल या एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो भी मैंने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ये सब जो कुछ भी सिखाया ये सब कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अब क्या बच रहा है, हाँ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का और या फैक्टर थ्योरम पर बेस जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सब तो तुमको देखना ही पड़ेगा, वो तो मतलब आ सकता है। और de Moivre's थ्योरम आ सकता है, मॉडुलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट और इनके इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो स्किप कर सकते हो या छोड़ सकते हो वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, उसको आप सिंपली ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे समझ में सिलेबस का। पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट रहेगा। लॉगरिथम आएगा ना, लॉगरिथम तो सिलेबस में है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बता रहा हूँ क्या सिलेबस में नहीं होगा। आज की क्लास का, आज हमने क्या पढ़ा है, लोकस जो हमने पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन जो भी हमने पढ़ा है उसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, बेसिक जो क्वेश्चन हमने किए वो आप तो कर सकते हो ना, लास्ट के दो क्वेश्चन जैसे हमने पढ़े हो तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है उसका। एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या जो भी हमने रिमेनिंग या कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको आप छोड़ सकते हो। आज का क्लास का यार बताया तो है, आज आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सर्कल नहीं आएगा, इसके बाद के बस हो गया खत्म क्लास आज अभी तक का जो हमने पढ़ा है। लास्ट के दो क्वेश्चन है उसका सर्कल, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप ये मल्टीपल करेक्ट के तीन क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं डिस्कस करूंगा। ट्राई दीज थ्री प्रॉब्लम। लाइन से प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीपल करेक्ट की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट ही आप खुद से करिए। प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है, मैं कहाँ तक प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं मल्टीपल करेक्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आप मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन कम ट्राई करते हैं, और एग्जाम में वही भरे रहते हैं, वही आते रहते हैं, क्योंकि एडवांस टाइप के पैटर्न की कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी एग्जाम होगा उसमें 7 8 5 6 प्रॉब्लम तो कम से कम मल्टीपल करेक्ट के रहते ही रहते हैं। सो नाउ यू कैन, आपको मैं देता हूँ 4 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, तो आपके लिए ये है, ये आपको 10 मिनट में, ऑन एन एवरेज 10 मिनट में आपको ये तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं, 10 मिनट। अभी हुआ है, कितना हुआ है, 7:26 हुआ है, 7:36 तक या 37 तक, चलो 7:37 तक आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद इसी तरह से आगे करेंगे। तो ट्राई दीज थ्री प्रॉब्लम। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सिलेबस में है, ध्यान रखना। वो इंटरप्रिटेशन पर भी हमने क्वेश्चन किए थे, एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पर किया था, एक हमने किया था इंटरप्रिटेशन पर, वो सर्कल बन जाता था, सर्कल से फिर डिस्टेंस निकालते थे, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस।
हाँ बेटा, सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, कंप्लीट हो चुका है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। अब आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, मतलब आपकी ये 1 या 2 क्लासेस होंगी इसके बाद, तो उसमें हम लोग कंप्लीटली इसी की प्रैक्टिस है, केवल और केवल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब आपकी मेरे ख्याल से एक क्लास है, तो 1 या 2 क्लासेस हैं। आप ऐसा एक क्लास है, क्योंकि एक क्लास तो प्रीपोन हो चुकी है, तो एक क्लास है, तो उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केवल करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस केवल। तो आप कहो तो मैं आई विल ट्राई टू टेक इन, मे बी इन सैटरडे, देखना पड़ेगा यदि मैं फ्री हूँगा तो। और वो भी कंप्लीटली प्रैक्टिस क्लास होगी, मतलब मॉड्यूल प्रैक्टिस। आज क्या है, फ्राइडे है। कल ही हो सकती है यदि आप लोग एग्री करो तो, क्योंकि ये आपकी, क्योंकि संडे को आपको एग्जाम है ना, इसी संडे को आपको एग्जाम है ना। अब इट इज अप टू यू, मतलब मैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को मैं क्लास जनरली अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस मॉड्यूल की, सिंपली मॉड्यूल की प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा, उसके बेसिस के बाद ही, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। वो भी मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग एग्री करो तो फिर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, तो यदि किसी ने भी नो बोला मतलब क्लास नहीं होगी, तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। और अभी आज की क्लास में जो पॉसिबल होगा मैं करा देता हूँ, तो मल्टीपल करेक्ट की मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ जितना पॉसिबल है मॉड्यूल से। तो आप ये 3 क्वेश्चन करिए अप टू 737, 738 कर देते हैं। लो, 3 मिनट पर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए।
हाँ बेटा समझिए, आई टू दी पावर 9 प्लस आई टू दी पावर -9, आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं ना ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 होल पावर एन, ये हो जाएगा ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 होल पावर -n. So ultimately this become e to the power n pi by 2 plus e to the power I minus n pi by 2. So this will become cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2. और सेकेंड वन become cos n pi by 2 minus sin n pi by 2. तो ये तो कैंसिल आउट होके तो आंसर क्या आ गया 2 cos n pi by 2 आ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो इसको तो दिख रहा है ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो डिनोमिनेटर से आयोटा हटाओ, तो डिनोमिनेटर से यदि आयोटा हटाना है हमको तो क्या करेंगे इसमें 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर होल पावर। अच्छा इसको भी ध्यान रखो, ये आप देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अच्छा इतना करने की जरूरत ही नहीं बेटा। देखो 2 की पावर n, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होल पावर n, इसे लिख लो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होल पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इतना? सो it will become 1 plus I square minus 2i whole power n. This will become 1 plus I square plus 2i whole power n डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर n आएगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये बचेगा माइनस आई की पावर n, और ये बचेगा, ये कैंसिल आउट होके 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आई की पावर n। अब देखिए माइनस, इसमें क्या करो हम आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, यदि हम आई टू दी पावर n इसके लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर की पावर n, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको मैंने क्या किया है? अब इसी तरह से आप ये मतलब कहने का मतलब इससे तो आंसर आया नहीं, अब इसी तरह से बी ऑप्शन कर लो, ये आ रहा है बी ऑप्शन में एग्जैक्टली सिमिलर वे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बी ऑप्शन बताऊं, बी ऑप्शन बताऊं क्या कैसे सॉल्व करना है? बी ऑप्शन में जैसे ही करें तो हम इसमें इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस आई बाई 2 इसका होल स्क्वायर होल पावर n, सेकेंड वाला 1 माइनस आई बाई 2 का होल स्क्वायर होल पावर n, ठीक है ना? स्क्वायर ओपन कर दो तो आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बाई 4, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 है, ये है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2 होल की पावर n, तो ये है, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i बाई 2 की होल पावर n, कैंसिल आउट होगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आई की पावर n, ये कैंसिल आउट होगा ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा माइनस आई की पावर n। अब माइनस आई की पावर n को हम लिख सकते हैं ना बेटा आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अब हम लिख सकते हैं ना इसको, देखो तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं आई से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस आई स्क्वायर अपॉन आई लिख सकते हैं ना, तो माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस आई की पावर n, दैट इज आई की पावर n आई की पावर माइनस n, तो ये आ गया, तो बी सही है। इसी तरह से तुम्हें बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे।
समझ में आया? तो कैलकुलेटिव है, बस जल्दी जल्दी से चेक कर लेना है आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 30 में तो ये क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 2, जो भी इतना बड़ा सा लिखा है वो रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन क्या है, ये है। तो ये तो पॉजिटिव है, रूट टू माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस आई प्लस टू आई माइनस टू। तो बेसिकली ये आ रहा है एक्स प्लस वन प्लस टू आई का मॉड लेस देन इक्वल टू, ये माइनस टू तो कट हो जाएगा, तो ये आ रहा है 2 रूट 2, ये आ रहा है। अब x, ये इसका ये मॉडुलस तो आप निकाल सकते हैं ना, ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा लेस देन इक्वल टू 2 रूट 2, स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लेस देन -4 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसके आप फैक्टर कर लेंगे, एक्स प्लस वन प्लस टू, एक्स प्लस वन माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू। अब इसका वेवी कर बनाओ आपका आंसर, तो आंसर आ जाएगा 3 to 1, सॉरी -3 to 1। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेस देन इक्वल टू आया, लेकिन आपको ग्रेटर देन जीरो भी लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक ग्रेटर देन जीरो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉगरिथम जब भी आप रिमूव करोगे तो आपको ग्रेटर देन जीरो भी लगाना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो एक इनइक्वालिटी तो सॉल्व करने, स्पेसिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा मैंने आपको बताया था ना, इस पर बेस्ड है ये, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a यदि लेस देन, यहाँ पे बेस में 2 है ना, बेस 2 है, लेस देन x है, तो n लेस देन 2 की पावर x हो जाएगा, लेकिन n ग्रेटर देन 0 भी तो रहेगा ना, बस ये अप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे यार मॉड्यूल आपके पास में, आंसर आप चेक कर लो, कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ, हर चीज मत पूछा करिए। आंसर तो मॉड्यूल है आपके पास, सॉल्यूशन भी है, लेकिन उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। कैलकुलेशन आप लोग करिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी खुद की हैबिट नहीं होगी तो एग्जाम में नहीं बनेगा फिर। 31 सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट जी जेड इक्वल टू 0, मतलब ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ये है Z1, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। अच्छा, इसको मैं Z1 एज्यूम कर लेता हूँ, चलो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये है, तो ये है Z1। तो बताइए जेड B क्या होगा, तो B क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने से आएगा ना, तो ये IZ1 हो जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट करते हैं ना, तो आई से मल्टीप्लाई हो जाती है, और सी तो डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ये -Z1 हो जाएगा। अब निकाल लो इनका सेंट्रॉइड, आया कि नहीं आया, सेंट्रॉइड क्या आएगा, Z1 प्लस IZ1 माइनस Z1/3, Z1 कट हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा Z1/3 इंटू आई। ऑप्शन से वेरीफाई कर लो कि इसकी वैल्यू ये इसके बराबर आ रही है। समझ में आ गया? करना कैसे है वो अब समझिए, बाकी की पूरा कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, खुद की आदत होना चाहिए करने की। एफ एक्स का मतलब होता है बेटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर। एफ एक्स ऑफ वर्टेक्स ए इज Z1, मतलब ए को रिप्रेजेंट, पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है।
ठीक है। अब चलिए, अब क्योंकि टाइम कम है, 2 क्वेश्चन कर लो, जो भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 32 कर लो, और बताओ कौन सा करना ट्राई करना चाहते हो। लाइन से ही कर लो, चलो 32 33 कर लो। 2 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। टुमारो यू डोंट हैव क्लास। बहुत कुछ बच्चे उसमें को प्रॉब्लम है अटेंड करने में। सो बेटर वुड बी टू अवॉइड क्लास टुमारो। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना जूम आउट सेशन अटेंड करिए। सो बेसिकली देख, क्या लिखा है, सम विथ 3 + 4i एंड अदर टू रूट्स विथ प्रोडक्ट 13 + i। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो कोएफिशिएंट्स आर रियल, सो ओवरऑल सम इज ए रियल नंबर। So if sum of two complex number is 3 + 4i, then sum of other two complex number will be 3 - 4i. So basically, let's say these alpha, beta, gamma, and delta are the 4 roots. So sum of them will be 6.
और सम ऑफ रूट इज माइनस ए बाई बी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 13 प्लस आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 13 प्लस आई। तो अल्फा देखो, अल्फा प्लस बीटा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, तो इससे आ गया गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि गामा डेल्टा की वैल्यू है 13 प्लस आई। सो व्हाट अबाउट अल्फा बीटा? अल्फा बीटा की वैल्यू होगी 13 माइनस आई। तो आप क्या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? So this will be the quadratic equation, x square minus sum of root into x plus product of root. Similarly, x square minus sum of root into x plus product of root. Now, if you multiply these two equations, you will get all the values of this. आप इस मतलब आपको यदि एक वन, दिस इज द वन ऑफ द मेथड, यू कैन सॉल्व अदर दिस वे also. What is sum of root? Sum of root is minus a, and this one is 3 plus 4i, and this one is 3 minus 4i is equal to minus a. So a will be minus 6. प्रोडक्ट b क्या होता है? वो होता है अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, इस तरह से होता है ना। तो वो होता है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ये होगा। अब आप इन सब की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? सी इज द प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। सो वो हो गया अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर सी। एंड व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स। नाउ यू नो दिस सम प्रोडक्ट, just put this value here, you will get the answer. ठीक है, आ गया समझ में? So this way you have to calculate. 33 क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर आर पी पी डैश वगैरह वगैरह लिखा है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रियल रूट, तो आप एज्यूम कर लो लेट एक्स इक्वल टू अल्फा बी एनी रियल रूट। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस पी डैश अल्फा क्यू प्लस आई क्यू डैश इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू प्लस आयोटा टाइम्स पी डैश अल्फा प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 कर दो तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू 0 आएगा, दूसरा पी डैश अल्फा प्लस क्यू डैश भी 0 आएगा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, क्या आएगा? माइनस क्यू डैश बाई पी डैश आएगा। इसको पुट कर देना इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन कंडीशन आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आपको क्या करना है, आप तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। और बस कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम लिखिए। पेपर डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना जो आपसे क्वेश्चन ट्राई, जो आपको बन रहे हैं, जो आपसे सॉल्व हो सकते हैं, केवल वही क्वेश्चन ट्राई करिए। एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो ट्राई करिए जो आपसे बन सकते हैं। यू डोंट हैव क्लास टुमारो, you if you have any doubt then you can attend Zoom doubt session. बेटर है कि आप अपना खुद से रिवाइज करिए और फुल फोकस्ड कॉन्फिडेंट कल बिल्कुल बिंदास तरीके से मेमोराइज करिए चीज़ें। ज़्यादा कुछ पढ़ाई, ज़्यादा कुछ लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। जिसने कंटिन्यूअसली रोज पढ़ाई की है तो उसको वो एग्जाम में भी अच्छा करेगा।
बेटा इजी या डिफिकल्ट ये तो पेपर आपसे बन गया तो इजी, नहीं बना तो डिफिकल्ट, तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, वो तो जब एग्जाम में देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि एडवांस टाइप के पेपर डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आपको केवल वही क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए जो, वही क्वेश्चन ट्राई करिए जो आपसे बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आर लिटिल बिट, जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेंथी होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है उनको थोड़ा सा सॉल्व। मेंस के होते हैं 5-6 स्टेप वाले क्वेश्चन, और एडवांस के होते हैं 10-15 स्टेप वाले, 10-15 स्टेप वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाई अपने रिवाइज करो, और अच्छी से नींद लो, और फिर अच्छे से एग्जाम लिखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।